Hello everyone. So this is the third video of preamble topic. Okay, we are dealing the last 38 questions, which is from Indian Polity. Okay, the question will be mainly from the state PSC examinations. Okay, so let's see today's questions. This is about myself. I did master from IIT Bombay. Okay, so we'll see today's questions. Okay, anyway, last two videos we have done the 20 question. If you are new in this channel, please watch those videos as well. Okay, you will completely memorize the preamble. Okay, I'm damn sure, because lot of question we are doing, same type of concept they are repeating again and again in different examinations. So please watch those videos. Okay, so how many types of justice, liberty, equality and fraternity in that order have been maintained in the preamble of the constitution? अब ये जो terms हैं कैसे कैसे किस order में है preamble में, वो हमें बताना है. ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, मैं काफी क्वेश्चंस करवा दिया हूँ इससे पहले. You just read the preamble, will get option A. Okay, so सबसे पहले हमारा आएगा 1, 2, 3 equality, then 1 second, justice, liberty, equality, fraternity. Okay, so you just see, you'll get this. Fine. अब मुझे पूरा preamble यहाँ पे लिख के बताना पड़ेगा, तो अब you just watch the previous classes, you will easily answer this question. Okay. Now India is a republic means, republic का meaning क्या होता है? It is the people who are the final authority in all matters. There is no parliamentary system of the government in India. There is no hereditary rule in India. India is the union of state. इसका आंसर एक्चुअली में C होगा. There are no hereditary rulers in India. Okay, so the answer is C. Republic means a state in which supreme power is held by the people and head of the state is elected by the people through election. In case of India, the head of state is elected by indirect election, that is the elected representative. Okay, hence India is a republic. So the answer is C. Next, India has people sovereignty because the preamble of the constitution begins with the words democratic India, republic of people, democratic people, we the people of India. अब देखिए, again I will tell you, please read preamble once before. I will not say before watching this video. If you are watching this at least from last two videos, so you will remember the preamble, because a lot of questions we have done. Even one of the questions they have given the preamble itself. But I will suggest you just read once, just type on Google Indian preamble. Okay, just read that and then you start watching this lecture. All the question you will do easily, because the question is coming from the preamble itself. Okay, थोड़ा 7-8 लाइन का है वो, वही उसी से घुमा घुमा के पूछ रहा है. इसमें भी हमारा D अगर आप देखो तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है we the people of India. So the answer is D. Next, where have the word we the people of India has been used in the constitution? ठीक है, कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात वही है. Directive principles, fundamental rights, citizenship, preamble of the constitution. So obviously we the people of India, it is given in the preamble of the constitution. Answer D. Next, all individuals are fully and equally human. This principle is known as universalism, holism, socialism, interactionism. Okay, so answer actually A होगा, universalism. Okay, so the answer is A. हमें socialism लग सकता है, but नहीं, इसका आंसर actually में A होगा. The principle of all individuals are fully and equally human is known as universalism.
According to this principle, every person is entitled to human right without any discrimination among them. Fine, so the answer is A. Next, which among the following is the correct explanation? Correct expression of term secular in India. India has many religion. India have religious freedom. Following the religion depends upon will of the individual. There is no religion of the state in India. इसका एक्चुअली में डी होगा हमारा आंसर, क्योंकि इंडिया में ऐसा देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया. जैसे पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री, हमारा ऐसा कुछ नहीं है. ओके, वी ट्रीट ऑल द रिलीजन इक्वली, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज डी हियर. नेक्स्ट, which of the following word is not in the preamble of the constitution? Socialist, secular, sovereign, public welfare. इसका आंसर हमारा डी होगा. बाकी तीनों दिया हुआ है प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड सोवरेन. पब्लिक वेलफेयर नहीं दिया हुआ, सो द आंसर इज डी. Which one of the following liberty is not embodied in the preamble of the Constitution of India? Liberty of thought, liberty of expression, liberty of belief, economic liberty. अब इसमें जो हमारा डी है वो नहीं दिया हुआ, और इकोनॉमिक लिबर्टी की कोई बात नहीं कर रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया embodied the liberty of thought, expression and belief, faith and worship, but does not include economic liberty. ठीक है, तो इकोनॉमिक लिबर्टी की बात नहीं हो रही, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो उसकी बात हो रही है. सो द आंसर इज डी. देखिए, कई बार हमें पता होने के बाद भी हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा आगे का सोच लेते हैं. बट हमें आगे का नहीं सोचना है, जो दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सोचना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following reflect the most appropriate relationship between the law and liberty? If there are more laws, there is less liberty. If there is no law, there is no liberty. If there is liberty, laws have to be made by the people. If laws were changed too often, liberty is in danger. अब देखिए, ये थोड़ा सा हमें इंटरप्रेट करना है. ओके, लॉ एंड लिबर्टी. सो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ, इफ देर इज नो लॉ देर इज नो लिबर्टी. ठीक है, अगर लॉ नहीं है तो लिबर्टी भी नहीं होगी. हम जो भी चीजें कर रहे हैं, ठीक, वो कैसे कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कर रहे हैं. ठीक है, अगर मान लेते नहीं होता तो हो सकता है कि हम जो कर रहे हैं वो नहीं कर पाते, ऐसा भी है. सो दैट्स वाई फिर मोनार्की होता, वो सप्रेस करता कि नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना. सो फिर लिबर्टी नहीं होती, जैसे अंग्रेजों के टाइम में जैसे होता था. इवन जब किंग्स वगैरह होते थे तो भी वैसे ही होता था. वो जो बोलते थे वही आप कर सकते हो, अपने मन से आप हर कुछ नहीं कर सकते हो. सो देयर इज अ लॉ. If there is a law, then there will be liberty. Okay, if there is no law, there will not be any liberty. Okay, so the two are not. ठीक है, अब यहाँ पे जरूरत नहीं इसको पढ़ने का. You can interpret. Okay, based on this. Next, which among the following is not maintained in the preamble of the Constitution? ठीक है, फिर वही चीज क्या दिया है क्या नहीं दिया. सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस. अब देखिए, इसमें रिलीजियस जस्टिस की कोई बात नहीं कर रही है हमारे प्रियम्बल में, बट यस, इकोनॉमिक जस्टिस इज देयर, सोशल जस्टिस इज देयर, पॉलिटिकल जस्टिस इज देयर. दिस इज नॉट देयर. ओके, सो द आंसर इज डी. Next, in the preamble of the Indian Constitution, which justice is provided to all the citizens? Okay, social, religious, political, social, economic, culture, social, political and culture, social, economic and political. इसका हमारा डी होगा आंसर. ठीक है, अब ये सब सारे क्वेश्चन आप एकदम आराम से तभी कर सकते जब आपको प्रियम्बल याद हो.
तो मैं यही चीज बार बार आपको बोलता हूँ कि आप प्रेम्बल को 10-15 बार 20 बार पढ़ लो, उससे ये सब क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आप देख लो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग। यूपीएससी ने भी कई क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, so you can expect at least one question from this topic itself. छोटा सा preamble है, उसको बस पढ़ लो। Next, which one of the following objective is not embodied in the preamble to the Constitution of India? Liberty of thought, economic liberty, liberty of expression, liberty of belief. ठीक है, so obviously we have seen, I think ये क्वेश्चन एक बार और कहीं पे आया हुआ था। so economic liberty नहीं है हमारा। okay, so the answer is B। देखिए ये सब ये एक्सप्लेनेशन बताने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है। इस वजह से जहां पे मुझे जरूरत होगा मैं वहां पे पढ़ूंगा। अब जैसे आप देख लो, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, बिसाइड सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस आर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये सब दिया हुआ है प्रेम्बल में। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें चूज करना है। सो इकोनॉमिक लिबर्टी इज नॉट गिवन, सो द आंसर इज बी। Next, which of the following is true in relation to the preamble of the Constitution of India? Okay, the words socialist and secular were not part of the preamble on the enforcement of the Constitution in 1950. Okay, the above mentioned word were inserted amendment in 1970। एकदम आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। The above mentioned word was inserted in 1995. Those were not part of preamble। ठीक है, अब इसका ऑब्वियस बात है, इसका आंसर ये है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी ये चीज नहीं थी, ये हमारा आया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, इसको उसमें ऐड किया गया था। ओके, कितनी बार हम लोग इस चीज को देख चुके हैं। सो दिस कॉन्सेप्ट बिकम piece of cake for us, especially those who are watching। okay, I'm not saying to those who are not watching। okay, देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, इतनी बार आया हुआ है। which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? okay, fundamental rights, DPSP, the preamble, the right of the right to the constitutional remedies। It is obviously a fundamental rights। okay, so the word socialist and secular were not the part of the preamble of the Constitution at the time of the commencement in 1950। these words were inserted in the preamble by the 42nd Amendment Act of 1976। is the soul, if the preamble is a foundation, then Constitution is structure on building, stand on it। ठीक है, so the answer is A। next question, and I think last question for this lecture or this video, who among the following called the preamble of Indian Constitution the horoscope of our sovereign democratic republic? okay, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी। तो ये चीज जो बोला गया था, ये द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दिस हैज बीन टेल्ड बाय द के.एम. मुंशी। ओके, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो आप बस इसको याद कर लो।